Hello everyone, welcome to my channel. Today I will tell you how to create a portfolio on Behance. But before that, you should know what Behance is. Behance is the world's largest creative network for showcasing and discovering creative work. What is the purpose of Behance? Behance is a platform that allows many people with web design careers to showcase their portfolios of visual work such as graphic design, fashion, illustration, and many more. So now you know what Behance is, what is the purpose of Behance. So now I will teach you how to create a portfolio on Behance. Okay. So firstly, you have to click on this link behance.net. You can see a landing page over here with a lot of creative work. एंड यू कैन ऑल्सो सी दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ एडोब. यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉग इन कर रखा है भव्य अग्रवाल के नाम से. अगर आपने लॉग इन नहीं कर रखा है तो आपका फर्स्ट स्टेप होगा लॉग इन करना. दिस इज अ सर्च टैब जहाँ पे आप प्रोजेक्ट्स, इमेजेस, पीपल, मूड बोर्ड्स को वेरियस चीजें आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं. नाउ आई विल टीच यू हाउ टू मेक अ बिहांस प्रोफाइल. बिहांस प्रोफाइल, एडिट योर प्रोफाइल. सबसे पहले आपको अपनी डालनी होगी बेसिक इंफॉर्मेशन, नेम, ऑक्यूपेशन, कंपनी, लोकेशन एंड वेबसाइट यूआरएल. फिर आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो टीम या क्रिएट कर सकते हो. अगर आप किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे हो तो आप उसका भी लिंक यहाँ पे ऐड कर सकते हो. आप अपने आप के बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, अपने आप को एक टाइटल दे सकते हो, वर्क एक्सपीरियंसेस डाल सकते हो, वेब रेफर, फोटो, बैक टू प्रोफाइल. Now there are various tabs over here. I will tell you about these tabs one by one. First is work. This work tab consists all of my past work I have uploaded. You can see over here. ओके देन नेक्स्ट इज लाइव स्ट्रीम. अगर आप कोई भी लाइव स्ट्रीम करते हो Behance पे तो आप यहाँ पे वो डाल सकते हैं. मूड बोर्ड इज बेसिकली अगर आपको किसी और का काम पसंद आता है, उसका कुछ पार्ट आपको पसंद आता है, आप वो सेव करके मूड बोर्ड में डाल सकते हैं. ठीक है, बेसिकली जो आपको अच्छा काम लगता है वो आपका मूड बोर्ड्स में आ जाता है. ओके, एप्रिसिएशंस, आपने किस किस का काम एप्रिशिएट किया है वो आता है. फिर आते हैं इनसाइट. इनसाइट इज बेसिकली लाइक अ डैशबोर्ड. हियर इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of your views, of your appreciation, comments, how your projects are working by months, which project is working very good, how's people reaction. Okay. See, so this is the project which is doing very good on my profile. Okay. ड्राफ्ट इज बेसिकली मैंने कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करा है लेकिन मुझे अपलोड नहीं करना अभी, तो मैंने बेसिकली अभी ड्राफ्ट में डाल दिया है. सो लेट्स स्टार्ट विद क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट. ओके, तो यहाँ पे आपको एक टैब दिख रहा होगा क्रिएट अ प्रोजेक्ट. उस पर आपको पहले क्लिक करना है. फिर आपके पास ये ऑप्शंस आएंगे. इमेज से आप इमेज ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, फोटो ग्रिड आप फोटोज का ग्रिड बना के डाल सकते हैं, वीडियो ऑडियो ऐड कर सकते हैं, इम्बेड मतलब कि आप कहीं आपकी यूट्यूब पे वीडियो डली हुई है, इंस्टाग्राम पे वीडियो डली हुई है तो आप वो भी इम्बेड करके डाल सकते हैं. यहाँ पे आपको यही सेम ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट इमेज. So let's take this image. It will take a little while. Now you can see this pen kind of a thing. You can edit from here. This gives you various options: reorder project, add caption, replace image, delete image. अब मैंने ये जो इमेज डाल रखी है मैं उसको डिलीट भी कर सकती हूँ, मैं उसको रिप्लेस भी कर सकती हूँ, मैं इसको कैप्शन भी दे सकती हूँ. जैसे मुझे इसको कैप्शन देना है ऑक्टोपस, तो आई कैन गिव अ caption to it like octopus. Okay, I can give caption to it. Now if I want to reorder project, जैसे अभी तो मैंने एक ही डाल रखा है, मैं 2-3 पेज और डालूंगी तो I can also reorder them. Okay, now I will tell you text.
you can enter your text over here. If you want to describe this image, you can describe in this, enter your text here. Okay, now I will tell you how to embed a video. ओके तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक यूट्यूब की वीडियो खोल रखी है, ठीक है। जब आप इसके शेयर ऑप्शन पे जाओगे, आपको एक ऑप्शन दिखेगा एम्बेड, क्लिक ऑन दैट, और फिर आपको ये पूरा का पूरा लिंक कॉपी करना है और Behance के उस पेज पे जाके एम्बेड पे क्लिक करें और वहीं पर पेस्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एम्बेड। There is a options of editing project. So there is only two options: background color and content spacing. Content spacing means spacing between this and this. Like you can see this spacing. I can increase it and I can also decrease the space between two of these project. Background color, like this is white, I can give red. So I've given red color. Save. Continue. This is like a thumbnail of your project. This should be very nice. People get attracted from your thumbnail and see your project. You can give a project title to it, like I will give Octopus. Project tags. Here you can give tags which will help people to discover your projects. Like I can give fashion illustration. You can give 10 tags like these. Okay, tools I have used, like I have used Adobe Photoshop, it is here. How would you categorize this project? You can select any of them: graphic design, illustration, photography, fashion, but you can only select up to 3. So I will select graphic design, illustration and fashion. Behance visibility, ये क्या आपको प्राइवेट रखना है, सिर्फ अपने आप को ही देखना है, या आप सबको दिखाना चाहते हैं? एवरीवन, but I will keep it private because it was just for teaching. Publish. Now it is giving me 3 options: cancel, save as draft or publish. If you want to publish it, you can publish it. It will be privately published. Save as draft, if you want to, मैंने आपको draft टैब के बारे में बताया था, वो वहां चल जाएगा। कैंसिल भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि ये नहीं बना है ढंग से, तो आप उसको कैंसिल करके नया बना सकते हैं। तो आई विल publish it and I will tell you how to delete from there. Publish. अब ये मेरा publish हो गया। ओके, मैंने आपको मूड बोर्ड के बारे में बताया था, तो अगर आपको जैसे ये पसंद आ रहा है तो यू विल सेव इट, इट विल गो टू योर मूड बोर्ड। ओके, नाउ लेट्स गो टू माय Behance प्रोफाइल। मैंने पब्लिश कर दिया है मेरा काम, बट अब मुझे ये डिलीट करना है। सी, मैंने प्राइवेटली डाला था तो ये प्राइवेट ही है, बट आई it is giving me various option: edit, clone, unpublish and delete. I want to delete it. Delete. Okay guys, so that's all for this video. If this video helped you, then do like it, comment it, share with your friends, and most importantly, subscribe to my channel. Thank you so much for watching.